टर्न हुआ, बड़ा बॉलर क्या करेगा? ऐसा टर्न होगा तो बोलेगा अभी थोड़ी ना मारेगा। मैं अपना अलग प्लानिंग कर रहा हूँ वहां पे बैठा हुआ। He was thinking mind में। The review said that it was umpire's call and I had to walk, and I was very disappointed. थोड़ा सा ज्यादा उस समय बुरा लग रहा था क्योंकि ऐसे टाइम पे अंपायर्स कॉल जस्ट क्लिपिंग वाला हो तो ज्यादा दुख होता है। मुझे अभी भी याद है उसके आर्म पर, शोल्डर पर, चेस्ट पर डार्क ब्लू बॉल के सारे मार्क्स आए हुए। I think the badgering and bruising in this game was lethal. Seen Pujara do special things. This Australian trip didn't get him 100, but he definitely played better than getting 100, I think. And disciplined, but he's as tough as nails, isn't he? Like he's a old-fashioned tough cricketer. And suddenly Agarwal is in. What does Pant do now? 4 विकेट हो गए अपने। तो I felt that pressure हल्का सा ज्यादा, यार अभी विकेट नहीं लूज कर सकते यहाँ पे। Heroics of Sydney is now the main man here at the Gabba. मेरा 50-100 बॉल्स में हुआ था, तो मैं सिर्फ एग्रेसिव नहीं खेल रहा था, मैं थोड़ा टाइम लेके भी खेल रहा था क्योंकि दूसरी तरफ से थोड़ा विकेट फंस भी रहा था, अच्छी बॉलिंग भी डाल रहे थे और इतना बॉल दूर डाल रहे थे कि वो सोच रहे थे अल्टी का चांद जबरदस्ती वाला, वो मेरे को नहीं लेना था। वॉशी बैटिंग करने आया, इतना पॉजिटिव इंटेंट के साथ बैटिंग करने आया, वो मेरे को बोल रहा मच्छा यू हैव टू विन नाउ। तो बहुत क्लोज आ गया मैच, अभी तो यहाँ से फिनिश ही करना पड़ेगा, बट एट द सेम टाइम प्रेशर भी था कि आउट हो गया यहाँ से अगर, क्योंकि एक मैंने शॉट ट्राई करा, वो थोड़ा सा लॉब हुआ बॉल, तो जैसी बॉल हवा में गया, ये क्या हुआ यार, लकीली वो बॉल गैप में गिरा। They kept bowling a lot of bounces to me. After a point, I sort of felt I think I should take them on. Hits it deep. More success for India. he's so hard to bowl to because at one stage he tried to go the reverse sweep, and then 2 balls later he steps miles outside and swept it behind there. And no one does that in Test cricket. He plays like it's a T20. Yeah, he's tough to bowl to. You've got 6 balls in an over. When someone like him is going at it, you think, gee, 6 balls is a lot to get through. He could hit me in 6 different areas if he has a good over here. So लाइन डाल रहा है तो मैं नए नए शॉट क्रिएट करूं क्योंकि इतनी दूर मेरे को बॉल डाल रहा है वो। Nathan Lyon had no answers here, and at least in Sydney, Shardul Thakur was walking in when Washington got out, और रोहित ने उसको कहा यही मौका है हीरो बनने का। as he was about to go, he said, "Shardul, तुम करके आना." This is exactly what he said. और उन्होंने सिर्फ नॉट किया और चले गए। I totally understand Shardul. He would have imagined, like how Ravi Bhai said, Dhoni hits a 6 and wins the World Cup. So inside his head, he's already figured out the moment, the commentary, the book, the movie, everything. So Shardul's gone for it and has gone to short square leg and he's got caught. And everybody inside like, what are you? रोहित मेरे बाजू में बैठा था। रोहित ने बोला मैच हमें जीतने दे, इसकी वाट लगाता हूँ, वैसे अभी छोड़ दे, मैच खत्म होने दे, फिर देखते हैं। थोड़ा सा प्रेशर हो गया यहाँ पे क्योंकि टेल आ गई थी पास में, अभी समझ में नहीं आ रहा था, बट रन बहुत कम चाहिए था हमारे को। मेंटली मैं सोच रहा हूँ कि यार ये ओवर में ही बनाना पड़ेगा, बट स्टिल आई ऑल्सो न्यू इन बैक ऑफ द माइंड कि अभी स्ट्राइक मैं किसी और को दे नहीं सकता हूँ यहाँ से। The game's going in such euphoria that everybody is forgotten who's the next batter to go. सैनी जैसे वॉक कर रहे थे तो मेरे माइंड में यही हुआ है सैनी इज इंजर्ड, अगर वो भाग नहीं पाए, रन नहीं ले पाए तो दिक्कत हो सकती है। At least Saini should have said, भैया मेरा regret तैयार हो गया, send somebody else. He also didn't. On strike. Yeah, that was tactical, Howie. Hazelwood deliberately bowling that ball down the leg side, trying to keep Rishabh Pant on strike. There have been 10 people who have given their heart and soul, life, blood, everything over a period of 4 days to come to that last particular moment where it was all under Rishabh Pant's bat. He had to bring true meaning to that entire series within those 3 minutes. Do you go short here? Do you risk Pant getting a top edge on the short ball? मेरे को लगा कि अगर मैंने स्ट्राइक दी तो दूसरी तरफ से ऑल आउट हो सकते हैं, तो मेरे को था कि इसी ओवर में मेरे को एंड करना पड़ेगा।
the ball the over. Hazelwood is delayed. Hart assesses the field. दिमाग से निकल गया सैनी जो है, मैं उसको भगा रहा हूँ वहाँ पे, सैनी भाग रहा है जोर जोर से. It goes as far as the fence. India incredible. Rishabh Pant is the star. India win the test. They win the series. And they win the hearts and minds of Some of the young names in there. Rishabh Pant, Mohammad Siraj, Shubman Gill. What an impact he had on the series as well. Prithvi Shaw had a test match early, but would have been part of this the series and part of this squad and would have learnt so much. Saini playing his first test match. Shardul Thakur playing just his second test match. He was injured in his first after just 10 balls. The amazing depth in this Indian cricket team is phenomenal. एडलेड के बाद जिस तरीके से लोगों ने हमें राइट ऑफ किया, हमारे अगेंस्ट में थे, आई थिंक वो सब चीजें उसी एक टाइम पे मेरे दिमाग में आई थी कि हम कहाँ थे और And India deserved to win, I think, because I think for a lot of the series we played better cricket in Sydney and in Brisbane, but the key moments, the real crucial moments, they grabbed. 36 पे ऑल आउट होने के बाद सीरीज जीतना, इससे बड़ा कोई अचीवमेंट नहीं है. Gabba Fortress 36 all out and winning in a place where they have never lost a match from 32 years. तो उन लोगों का पूरा घावा का धमन तोड़ी दिया उन लोग का. Their weakness was their strength. Nobody expected them to win. Nobody expected this team, which was missing so many of its first choice players, would do anything. And in a way, Australia's strength became its weakness because its bowlers, its first choice bowlers, were available for every test. To never give up. To know that no matter how difficult things get, no matter how much things are stacked against you, if you stay in the game, stay with it right until the very